voltage. So this is my DC power supply, and this inverter circuit I have made over here using 555 IC, using two IRA 540 MOSFET, and this is my transformer, center tap transformer 12012. So Bhavesh, hello. Hello, Bhavesh. Hello. Hello. We are not able to see the video of inverter circuit. Hello. 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 Yeah, Hello. we can Sorry play the everyone for video. the inconvenience. Okay. Because I switch on my video, that's why that there is a problem with lag in that PPT. So I'm just Yeah, you sharing can that switch it off. video No again. worries. Yeah, you can switch it off your video. Yes. Thank you. Thank you. Okay. Is the screen visible to everyone? Yes, yes. Neville, is the screen visible? Yes. Wait a second. This is the project video. So this is my inverter circuit I have made over here. Inverter circuit. Inverter is basically it convert DC to AC voltage. So this is my DC power supply, and this inverter circuit I have made over here using 555 IC, using two IRA 540 MOSFET, and this is my transformer, center tap transformer 12012. So what I'll do basically, I'll give some amount of DC voltage and it will convert it to 230 volt AC voltage. So this is the work of inverter circuit. So see, I now switch on the power supply. See, I have switched on the power supply and it's nearly some around 6 volt. And see, it has converted to 30 volt. And this bulb works on 230 volt. So thank you. Next slide, Bhavesh. These are some of the references we have referred. Next slide. Thank you. Yes, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Thank you for the presentation. And can you get back to the slide where you show the pictures of the model, the mechanical picture model using pulleys and that kind of stuff that you have made? Yes, sir. Okay, sir. Bhavesh, please go to the side. Yes, yes. Uh, this slide, sir. Project video or this Mm, slide? previous one. There was one slide which showed a number of pulleys and things Yes, like. yes. Bhavesh, that first one, wheel mechanism, first concept. Is that your model? This one? This one, sir. Yeah, yeah. Is this a part of your model? Yes, sir. This was we have created this model and it was running also, but the main thing was the problem with the budget. Budget was going high, so this concept we have kept aside, and then we have implemented the whole project on the bicycle because that was cheap and it and easily everyone can be available for that cycle budget. So that's why. Okay. And why did you, I mean, how did you get inspired by the sewing machine? There are, I mean, I
was thinking while your presentation was going on that there are a number of other mechanisms which can produce rotational motion to turn the shaft of a generator or an alternator. Correct, sir. Why did you specifically choose the sewing machine mechanism? Swing mechanism, sir, because this swing mechanism concept is like old days also it was there for everyone, and nowadays also like everyone use the swing mechanism. Like not in some people has their swing mechanism at home also. Most of the mummies and all they have the habit to use the swing mechanism. So it would be better that if you implement the swing mechanism, it would be kept at one side. At one side they can give the pedal and they can generate the energy in the house also. That was the better concept it came in our mind. And the swing mechanism we can buy also at if the bangar walas and all they also can have, and at cheap price also they can give this swing mechanism. So that's why it came in our mind, sir. Okay. And last question from my side. How are you going to commercialize this thing? Are you going to sell this to individual highway owners, or are you going to sell this to, I don't know, like emergency power generation stations, or what? Like, how are you planning to sell this? So we can give them a best offer that see nowadays most of the people have cycle at home. Each and every student has their own cycle at home. So on that also we can build them, and we can at cheap price we can build them this power generation system, and we can give them. Or if they want idea from with like whatever help is required from our side, we can give this, and we can tell them like there is no profit based something project is this. This is just to help the rural areas for getting energy, because certain nowadays also people don't have electricity at their home. 24-hour electricity are not available at home. So just we are making clear that they should be there 24 hours electricity at their home, and this project will be provided 8 hours electricity for them. So and by recycling concept also they can use much electricity. Okay. And to generate that 8 hours of power, how much time do you have to cycle that? So it would be take around to 23 minutes of pedaling. 23 minutes. It depends on the person capacity. If the person is more stronger and harder, if he's able to pedal more, then on time limit will be less to pedal, and the electricity would be generated faster with a less amount of pedaling. Okay. That's all from my side. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello. Yes, sir. Yes, ma'am. Huh. Yes, ma'am. My question is which type of alternator, means which type of generator is being used here? Ma'am, car alternator, that cars alternators and all are there. This alternator we are using. These are used in cars and all. And these are easily available, ma'am, at where the car places are getting scrapped and all our old cars and all. We can take from old cars also. No need to buy new. From old also, we can use the alternator and we can generate electricity, ma'am. Okay. Then what is the capacity of the battery? Ma'am, the capacity of batteries, it is 12 volts, 7 amperes. 12 volt and 7 amperes. Yes, Okay. ma'am. And from this battery, you require to use the alternator so that it will give you the AC output, isn't it? Yes, ma'am. Correct, ma'am. This will charge the battery, ma'am. This will charge the battery also. Who will charge the battery? Alternator will charge the battery. And after that battery, this inverter is connected. Yes, Isn't correct, it? ma'am. That will Yes, give ma'am. you the AC output. Correct, So just ma'am. tell me, for this, you have shown that So, ma'am, your hello, hello, ma'am. Ma'am, Ma'am, your voice is not able to hear, little ma'am. bit low, ma'am. Ma'am. Just a minute. Okay. Ma'am, you are not audible. Could you please rejoin? hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So my question is, which semiconductor switches are used so that you can make that inverter? Ma'am, MOSFETs are used. IRF 540 or IRF Z44 are used.
Then triple five IC is used. Triple five ICs are easily available in markets. It is very cheap and it's also available in colleges also. Then we have all the experiments done in triple five IC in every college. And then IRF 540 is available. If not, then IRF Z44 also can be used. Okay, This. how many the semiconductor devices you require? Ma'am, if you want to drive the state, like one, we have stored the power inverter that is readily available on website. If the person is able to buy, that is also well and good enough. If not able to buy, then we can make a inverter. If you want some more output, like 100 watt, 200 watt, more than 500 watt, then he has to change the two things. He has to make a transformer. Means like we have to take buy a transformer which are 5 amperes, 1 amperes output more than, and then we have to connect MOSFETs according to them. We have to increase the MOSFET. So then the output can be able to, we can use the output, more output. Okay, and as per your calculation, hardly 20 to 25 minutes are required to charge your battery. Yes, ma'am, 23 minutes. Depends on the person capacity also, ma'am. Okay, we will take the maximum 30 minutes are being required. Correct, So correct. if now just think there isn't now that battery is being stored for 30 minutes. So that battery, how much hours it will give the AC output? Ma'am, up to 8 hours it will give. 8 hours. Yes, ma'am. And output will be of how many volt? Ma'am, 230 volt. output, yeah, output will be 230 volt because inverter is there, AC. Okay, ठीक है, no problem. Thank you, ma'am. It's a great project, Bhavesh and Nabil. Thank you, Next up, ma'am. we have Namrata and team. You guys can start presenting. Thank you. Sorry for the inconvenience produced. Yeah, it's okay, no problem. Hello everyone. We are the students from Banariaman Institute of Technology from E-Road. We are here to present about green building. In the first, we can see about the introduction of the green building. Green building is a resource-efficient method of construction that produces healthier buildings and also requires less cost to maintain. Green buildings improves our quality of life, and it's no, the green building is also known as the sustainable buildings. Green building creates more positive impacts on the Excuse me, environment. Namrata. It's good for our health. Namrata, sorry to interrupt, but please everyone switch on your cameras. Yes. Also, I think you have two mics on because of which there is an echo. So could you switch off one of the mics? In the next, we can see why green buildings are needed. It's more comfortable and safe and healthy. It also conserves the water
It operates energy efficiently, it's more durable and maintained with a minimal environmental impact. To build a green building, the cost is very much low and it's suitable for everyone to build it, and it's very good for our health also to live in that building. And we can see the objectives now. Using energy, water, and other resources efficiently. It uses in an efficient manner, and it also satisfies the quality of the indoor spaces, and it ensures the inhabitant well-being. It improves the employees' profitability, and it also minimizes the waste, pollution, and environmental dehydration. In the next, we can see this is the model of a green building. In that, we can see that there is a solar panel. In that, everything is in a very natural manner, so that we could breathe a good oxygen in that, surrounded by the trees, and it's built in a manner which is very natural, and it also very much cost efficient. Everyone is able to build construct and building like this. In the next, we can see the fundamental principles. It's livable communities, and it's resource efficient. It uses the resources very efficiently, and the indoor quality, air quality is very good and clean, so that we won't be able to get the diseases easily, because we are breathing the good air, and it also conserves the water, energy efficiency, and also waste efficiency. And in the next, we can see about the benefits of the green building. There are three benefits: environmental benefits, economic benefits, and social benefits. In the The, environmental, yes. now we're going to see about the environmental benefits. It, it will it will improve the air and water quality of our surroundings, and it will upgrade our product biodiversity and ecosystem, and it will reduce the waste, and it also comes under the natural resource. And at next, economic benefits, it will improve our occupant productivity and reduce cost, and the cost expand and shape market or green product in service, upgrade life circular economic performance. At last, we is going to see about the social benefit. It will improve our quality of our life, and it upgrade the health and the comfort of our occupant, and limit the strain on the local utility infrastructure, and the quality of our indoor air will improve. Okay. In the next, we can see the rating systems of the green building. It has three ratings: leadership in energy and environmental design, and Indian Green Building Council, and green rating for the integrated habitat assessment. These are the three ratings given to that green building. And the materials used in the green building is very much low in cost, and it's everyone can buy that. It's easy for that. Wool brick and sustainable concrete, solar tiles, paper insulations, and triple glazed windows, bamboo. If there's no bamboo, they can also replace it by the steel bars. These are the materials used to build it.
And the indoor air quality in green building is that indoor air quality plays a vital role in the well-being of the people residing in the building. The quality indoor environment can result in an increased occupant satisfaction, enhanced performance and productivity, reduced liability, marketing advantage, and lower operations and maintenance costs. It also gives them job to many of the employees, and it's in which there is no known contaminants at harmful concentrations, and with sustainable majority of the people exposed do not express dissatisfaction. The air is very good to breathe in. And planning the structure with the previously mentioned contemplations has an immense positive effect on the indoor air nature of the structure. And now we can see that the factors affecting the indoor air quality, pesticide applications, like we used to garden many trees, but sometimes we may use the pesticides to for the better growth of the plants. It may affect the indoor air quality, so we must avoid that. And the pollutants from outdoor, like if we build a house near the factories, from the factories, the smoke will definitely come out. That may affect the indoor air quality. And contaminated soil gassing into the air, and volatile organic compounds in the air, and dry clean fabrics, adhesives, paints, cosmetics. The paints we may use to everyone like to build the house and paint in the color which they want, but it may also affect the indoor air quality. And the cosmetics we are using, like to in the faces, like lipstick, that and all will affect the indoor air quality. And controlling of in the how to we can also control that by using the pesticides when the people are not available in the home. We can use it, and we can go somewhere for an hour, or for 2 hours, and then if we come back, then we won't be get affected by that. And use solvents and other chemicals outdoor. We can use the chemicals whatever using, by we can use it in the outdoor, so that the indoor quality will not be air quality will not be affected. Cover the materials that can off the gas. We should cover it clean safely, whatever chemicals gases we are using it. And limit the smoking to the protected area. If smoking person is in our house, they can have a protected area, so that other persons won't affected by that smoke that comes out. Uses of best technologies. And the advantages of green building, it's healthier indoor environment, it's more energy efficient, it's comfortable for every people, every age group peoples, and reduce construction waste. Waste we If we build a normal building, we would get many construction waste, and it's an but in this green building, that wastes will be limited, so that it's easy for the employees to move it. And the energy efficient water management, the reduced destructions to the ecology, extensive use of renewable energy, use of non-toxic materials leads to the better indoor air quality. And the conclusion: green building is environmentally responsible idea which more people must try to adapt. Green building have the potential to promote more favorable indoor air quality. Green building has better indoor air quality than the conventional building. Than the normal buildings, in the green building, the air quality will be good, and the people may try to adapt to this green building than to the normal buildings what they are building now. These buildings are dynamic environments that respond to the occupants' needs and the lifestyles. Thank you. Hello.
Can you hear me? Hello? Yes, sir. Yeah, can you hear me? Yes, sir, you're audible. Okay. Uh, so thank you for the presentation. And did you make a model or something for this? Like, I mean, I wanted to ask you, like, you've done a Yeah, great study about green buildings, and Sorry, like, sir, I couldn't hear you, sir. hello, is it okay now? Ah, yes, sir. So I see that you have done a very detailed study about green buildings and the certifications, LEED and GRIA, and the factors that affect green building performance. And so I'm a bit unsure about as to what exactly your project was about. Like, what are you suggesting as an improvement to the current scenario of green buildings? In the current normal buildings, there will be many pollutants like materials used for the construction also will affect our health. But in this green building, everything is made in the natural way, so that it doesn't affect our health also. Okay. So yeah, I mean, that's what I'm saying. So like green buildings, as you said, it appears to be an established concept, right? So there are certifications to say whether this building is green or not. So that means it appears that the concept is already out there. So what is it that your group is suggesting as an improvement in the current scenario? It has three ratings given by the government, that LEED and IGBC, GRIHA, three ratings given to that. Okay. Okay. And did you make a model for this? Yes, sir, we are going to do that. We are starting the process, but due to this pandemic situation, we have stopped it now. Okay. I mean, can you go to the slide where you showed the beautiful picture of all Yes, the, sir. Okay, sir. yeah. So did you, can I ask you if it was your group which who designed this concept drawing, or have you just shown it as an illustration? Is this just an example or is this your design? It's an example. It's a model. Okay, okay. Thank you. So, Namrita, my question is, I hope I'm audible. Hello, Yes, ma'am. am I audible? Yes, yes, ma'am. ma'am. Uh-huh. My question is, uh, all that green buildings, all things are okay, but now if I have a normal home and if we want to make it as a green home, is there any facility that we can change it from a normal to the green building? No, Is there any? no, ma'am. But we can construct. Next, what we are going to construct, we can construct in that way. If we need to change it, then it is a big process. For that, we can build a new, and we can build in a way that it's a green building than the normal building. Means whatever existing building, we do not have any facility, or we do not have any procedure to go for a green building way, isn't it? I couldn't hear, ma'am. Once again, can you please say? Means I'm asking that, means
You are saying there isn't any procedure which by following it we can say that now my old normal building is being said as a green building. We can't change the normal building to a green building, but we can construct the new building as a green building. Means if we want to be a green building, we require to construct a new building, isn't it? And the building during construction only we require to make it as a green building. Yes, ma'am. Before before we are going to construct, we will put a plan. That time we can decide. We can build a green building. So the materials what we are buying for that construction, we have to buy whatever needed for the green building, so that we can construct that. So is it a cost effective if you compare it with our Yes, it's normal? very much low costs. So that every people can adapt to that. It's very good for our health also. No, all that things are okay, good for health, but our this green buildings are they sustainable in a heavy rainy conditions for the 4 to 5 months? If heavy raining conditions are being there, are they be sustainable for that type of natural Yes, calamity? yes, everything we can lead a normal life in that building. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Yeah, thanks a lot for your presentation. Moving on, we have our next team. The team members are Amanullah and Abdul Haq Siddiqui. Am I audible? Hello? Yes, you are audible. Abdul? Okay. A very good evening to all the respected juries and my dear friends. My name is Amanullah and my team mate is Abdul Haq Siddiqui and we are from Jamia Millia Islamia. Have to set it on the tripod or something Abdul, from please share. different directions. Our project is solar power, self-generating and self-sustaining disinfection system for Tripod that we preventing have. COVID-19 in remote places. Basically, the main objective is Basically, the main objective of the invention is to provide the self-generating disinfection system powered by solar energy in order to prevent COVID-19 or similar diseases in large gathering public and remote places where electricity outages are quite common. The system comprises of solar equipments and electrolytic disinfectant generator integrated with other burners. A fine disinfectant mist is generated inside the chamber, which eventually removes any harmful infection bacteria on the incoming person. The invention is highly suitable for all the outdoor application, including mass gathering requires on a small area of interest for the whole setup. Simple in construction, no complicated in wiring system. Eco-friendly in nature, work on renewable energy, non-toxic in nature, has high efficiency in the eliminator and suppression of the bacteria and viruses. Limited quantity water required for whole operation and reduce overall and working cost and comparison to other disinfection system. Respected juries, our project comprises of a room attached with a mist sprinklers with issued disinfectant mixture on person. The mixture is issued at high velocity with the help of 0.5 kilowatt booster pump, whose electricity demand is fulfilled by inverter and battery setup. The battery is charged with photovoltaic cell attached at top of room. Electrolytic disinfectant is used attached with chlorine rod and produce hypochlorite disinfectant and oxygen only protect. These tunnels are equipped with infrared detectors that activate the disinfectant spray whenever a person enters and before entering in the check the temperature. रिस्पेक्टेड जूरीज, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सोलर पैनल से चलता है और ये इस पे हम ये बेसिकली हमारे रिमोट प्लेसेस के लिए बनाया था हम लोगों ने रिमोट प्लेसेस के लिए बना हुआ है इसमें जो है हमने वाटर के साइड क्लोराइड रॉड को जो है
क्लोराइड रॉड को मर्ज करा के उसमें जो है रिएक्शन करा के हमने उसका केमिकल बनाया। हमने कोई अलग से केमिकल नहीं बनाया हुआ है। हम प्लीज एक रिव्यू। ओके, the enclosure is made up of mild steel brackets of dimension 30 into 15 मीटर। ये जो हमारे क्या कहते हैं, ओके शो करते हैं, 30 into 30 into 15 meter, three solar equipment boxes 101, 102 and 103 placed on the left side of the enclosure, a three set of solar photovoltaic molecules configured to attach at the top of enclosure. Mm, a charge regulator connected to the three set of solar voltaic modules and the further connected to the inverter and bulb। इन्वर्टर जो हमने लिया है वो माइक्रोटेक का लिया है, कैपेसिटी 1 किलोवाट है ना। Relative windows which are made above, बेसिकली जो हमारा 100 सोलर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सोलर पैनल है 100। फिर हमने उसको इंफ्रारेड डिटेक्टर, हमारा इंफ्रारेड डिटेक्टर 116 जो इसमें मेंशन है वो इंफ्रारेड डिटेक्टर है। वो बेसिकली हमारा जब हम अपनी मशीन में इंटर करते हैं तो वहाँ पे हमारे जब पर्सन कोई इंटर करने जाता है तो हमारी बॉडी को पहले टेम्परेचर चेक करता है। अगर हमारी बॉडी के टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये इंफ्रारेड डिटेक्टर जो है एक अलार्म बजाता है और उसको साइड में कर देता है। ठीक है, 110 इज अलार्म, 101 इन्वर्टर सोलर पैनल, ये जो है अलार्म इन्वर्टर पे जाता है और उस इन्वर्टर जो है कनेक्टेड है 102 चेंज रेगुलेटर से, और चेंज रेगुलेटर जो है 103 बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसइंफेक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसइंफेक्टर यहाँ पे हेलो। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हाँ। हमारा पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड है या वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसइंफेक्टर पे है, एक सोलर पैनल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिसइंफेक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसइंफेक्टर के अंदर हमारा ओके, आई वाटर डिडंट और हर्ड ऑफ क्लोरीन रॉड आपस में रिएक्ट करके आई हाइपोक्लोराइक नेवर हर्ड ऑफ एसिड द बनाते हैं। थिंग हाइपोक्लोरिक व्हाट यू एसिड सेड। जो कि हमारे बॉडी, जो कि या हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसइंफेक्टर जो है ये हमारा हाइपोक्लोरिक एसिड। या आई रिमेंबर इंडिया लाइक काउंसिल ऑफ हाउ मच मेडिकल बिफोर। एसोसिएशन ने इसे प्रूव करा है कि 99 या स्किन पे आई से रिमेंबर हमारी दैट। बॉडी पे अगर ये पड़ता है तो ये हमारे स्किन पे रिएक्ट नहीं करता। हमारी जो है इससे पहले जो इससे पहले जो Not टनल्स right आई थी, now. इससे Can पहले we जो talk इन्होंने it किया था like I'm उसमें in जो है right middle of a इसका जो है phase or ब्लीचिंग college पाउडर का phase? यूज करते थे, जिससे वजह से हमारे फेस में, हमारी बॉडी में, Yeah. हमारे इसमें इचिंग होने लगती थी और Maybe बहुत सारे next इन्फेक्शन हो week गए like थे today and tomorrow we have college fest. इसमें। और हमने इसमें Then I am सेंसर्स यूज free करे after हैं। that. आगे मूव करो स्टेप प्लीज। Okay, that will do. ओके, ये फ्रंट व्यू है, मूव प्लीज मूव। लाइन ड्राइंग, ये हमारी लाइन ड्राइंग है, प्लीज मूव। या प्लीज, प्लीज प्ले दिस, अब्दुल प्लीज। ये लास्ट है। या बेसिकली ये हमारा एक मॉडल है, लाइव मॉडल जो हमने बनाया हुआ है जामिया इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में। ये हमारे टेरिस पर रखा हुआ एक मॉडल है। मॉडल में ये मेरा फ्रेंड है अब्दुल, इसको शूट कर रहा है। ये जो टनल है इसके बाहर हमने यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर रख रखा है। हैंड सैनिटाइजर इस वजह से रखा हुआ है कि जब भी हम कभी, फॉर प्रिकॉशन, कि हम हमारी जो टनल है वो कहीं से हमसे टच ना हो और उस पर जो है कोई इन्फेक्शन ना हो। अंदर आप जाते हो, ये जो बंदा अंदर जा रहा है दोस्त हमारा, प्लीज वो कंटिन्यू। अंदर गया, हमने इसमें चार चार स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं, मिस स्प्रिंकलर। मिस स्प्रिंकलर्स का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है फॉग टाइप के स्प्रिंकलर्स होते हैं, इससे हमारे कपड़े नहीं भीगते, इससे हमारे कपड़े नहीं भीगते। और इसमें हमने साइड में फोर, एक 55 डिग्री एंगल पे और एक 45 डिग्री एंगल पे हमने इसे लगा रखा है। प्लीज नेक्स्ट वीडियो। हो स्ट्रीम करतो ना मी YouTube वर लाईव्ह चालू आहे. दिस इज ये हमारे YouTube वर 4 लाईव्ह चालू स्प्रिंकलर्स आहे. हैं और ये हमारे लेफ्ट में 4 स्प्रिंकलर्स हैं और इसके ऊपर जो है हमारा जो है सोलर पैनल लगा हुआ है और प्रोजेक्ट साइड में हमारा प्रेजेंटेशन चाहिए. वो ऑटो कैटेड डायग्राम, वो वाला वीडियो प्ले कर देना प्लीज।
इसमें हमने बेसिकली एट स्प्रिंकलर्स लगाए हैं डायरेक्टर टुवर्ड द कमिंग पर्सन। हमारा जो है जिस साइड से आदमी जाएगा, जिस पर्सन जाएगा, उसी की साइड हमने लगा रखा है। और नोजल जो है वो ब्रास टाइप का है, और उसका जो हेड है वो एसएस टाइप का, एसएस का स्टेनलेस स्टील का और निकल प्लेटेड है। बिकॉज निकल प्लेटेड हमने इसको इस वजह से दिया हुआ है कि इसको हम इसको अपने एंगल के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। जैसे किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई जेंट्स है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सेट कर सकते हैं कि हमें कितने हाइट, हमारे एरिया में किस तरह के लोग आ रहे हैं, कोई हाइट ज्यादा है, तो इसको जो है निकल प्लेटेड की वजह से ये एडजस्टेबल है एंड कैन बी एंगल अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। दिस इज और इसके जो मिस्ट इसमें से जो निकल रही है हाई प्रेशर, ये 70 to 80 बार्स हाई प्रेशर डिसइंफेक्टेंट फोर्स, इसमें जो फोर्स आ रहा है वो 70 to 80 बार्स का आ रहा है। इसमें जो इसकी जो ओपनिंग माउथ है, जो इसमें जो हमारा नोजल है, उसका जो ओपनिंग माउथ है वो 0.0 से 0.010 इंचेस स्पेशली, जिसकी वजह से वो एक मिस्ट, फॉगी मिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रोड्यूस फॉगी मिस्ट बिलियन माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स। ऑटो कैडेड डायग्राम दिखाना प्लीज। ओके, ये बेसिकली हमारा 3D व्यू डायग्राम है। हमने इसमें क्या किया है, हमारा ये टनल है, टनल के ऊपर हमने सोलर पैनल लगाया हुआ है। सोलर पैनल से ये जो सोलर पैनल है, इसकी जो खासियत ये है, इसमें जो ये हमारी टनल है, इसमें सारा केमिकल और सारा जितनी भी चीज़ है ये हम खुद बना रहे हैं। हम कोई मार्केट से नहीं ले रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने ऐसे प्लेसेस के लिए बनाया है, रिमोट प्लेसेस के लिए, रिमोट प्लेसेस के लिए जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, जहाँ पे कोई, इवन हम इसको अपने यहाँ दिल्ली में भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है था, ये जो आइडिया आया था, ये हम लोग का जो है उस क्या कहते हैं रूरल एरियाज के लिए आया था। रूरल एरियाज में जहाँ पे क्या कहते हैं हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, जहाँ पे हम केयर नहीं कर पाते। प्लीज ये हमारा ऑटो कैडेड डायग्राम है। ओके, ये हमारे पैनल्स है, ये हमारे पैनल्स है। साइड में जो है ये मिरर लगा हुआ है। ये जो मिरर है, ये जो क्या कहते हैं, एक मिनट, एक मिनट। क्या ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिसइंफेक्टर है, इज यूज्ड विद द अटैच विद क्लोरीन रोड एंड प्रोड्यूस हाइपोक्लोरिक एसिड। प्लीज नो, प्लीज कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू प्लीज। स्प्रे करते हैं। इसमें हमारे कहते हैं पीआईआर सेंसर्स हमने लगाए हैं। पीआर सेंसर्स के लिए, पीआर सेंसर्स होते हैं जो हमारे बॉडी को जो है मूव करने पे, मूवमेंट को देख के उसको जो है स्प्रे करते हैं, अलाउ करते हैं और वो उसको स्प्रे करते हैं। स्प्रे करो ये हमारा प्लास्टिक शिफ्ट कवर है। प्लास्टिक शिफ्ट कवर जहाँ से हम एंट्री करेंगे, जहाँ से हम एग्जिट करेंगे। ये सेंसर है हमारा, ये सेंसर हमने यूज करा हुआ है पीआईआर सेंसर। ये जो है ह्यूमन बॉडी को जो बड़े साइजेस होते हैं उनको देख के जो है देख के, और इसका थ्रू जो है ये स्प्रिंकलर्स को स्प्रिंक करता है। ओके, ओके, post analysis. Post analysis. Economic return. Yeah, okay. Please continue. Economic return. Yeah. Okay.
A sufficient economic return of energy efficient investment is crucial. The sustainable development of the green sanitizer industry, the amount spent in the established system will be recovered are using in the certain amount of time. हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो इसका अमाउंट है, जो इसमें हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो एक टाइम बाद उसका जो है कॉस्ट हम पे निकल आएगी। उसके बाद ये जो पूरी मशीन है ये फ्री हो जाएगी। हमने क्या किया है, ओके, 200 पीपल एवरेज इसके जो है क्या कहते हैं मैक्सिमम पावर रखा हुआ है 200 पीपल एवरेज, मतलब टू मैक्सिमम एवरेज रखा हुआ है हमने। इसमें से एक बार में 24 आवर्स में या एक आवर में जो है 200 पीपल पास कर सकते हैं। 200 पीपल विच इज इन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। और अगर हम यूनिट की बात करें तो इसमें एक यूनिट अगर जो देखा जाए 24 आवर में 24 यूनिट होगी। अगर एक यूनिट हमारी दिल्ली के अकॉर्डिंग 8 रुपए है, दिल्ली के अकॉर्डिंगली 8 रुपए। अभी मैं ये इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करता हूँ, फिर इसको कंपैरिजन करेंगे। ओके, मशीन पूरे दिन चलेगी और मैक्सिमम पावर रिक्वायरमेंट होगी पूरे दिन की 24 किलोवाट आवर विच इज 24 यूनिट। और एक यूनिट हमारी जो है 8 रुपए की है। फॉर हमने आपको तो क्या है, तो व्हेन 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 रुपए, द होल डे ऑपरेशन इज इक्वल टू 24 यूनिट, राइट। तो 24 into 8 इज इक्वल टू 190 192। हमने इसमें 200 अप्रोक्सीमेटली ले लिया पर डे कॉस्ट, राइट। तो 200 पे हमारी जो है पर डे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रही है। पर डे को अगर हमने मंथली को पर मंथ कॉस्ट निकाला है तो 6000 आ रही है। अगर हम अगर इसे ईयरली को निकालते हैं, ईयरली अगर हम इसको निकालते हैं तो 72,000 रुपीज हमारी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉस्ट आ रही है। 72 रुपीज ओनली, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की आवाज। अब हम सोलर पैनल की बात करते हैं तो हमारा सोलर पैनल कॉस्ट जो है 6000 रुपीज है, बैटरी कॉस्ट 4000 रुपीज है, इन्वर्टर कॉस्ट 5000 रुपीज। मैं एक यूनिट के लिए बात कर रहा हूँ। इसको मिसलेनियस कॉस्ट अभी स्टेबल है उसमें, मिसलेनियस कॉस्ट 5000। टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है 20,000 रुपीज की, विच इज फॉर लेस देन टोटल ऑप्शनल कॉस्ट। और हमने इसको एक बार बना दिया, एक बार इसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद दोबारा हमें इस इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है। पानी हमारा इसमें सिर्फ हमने वाटर, नॉर्मल वाटर और क्लोरीन रॉड की हेल्प से हमने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसमें सोलर सेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सोलर सेल जो 18,000 रुपीज का है, इन्वर्टर 28,000 रुपीज का है, सोलर बैटरी 13,000 की, चार्ज रेगुलेटर 4,000, प्रेशर पंप 40,000, मिसलेनियस 5,000। टोटल प्राइस हमारा आ रहा है 1,23,000। तो ये 1,23,000 हम एज्यूम करते हैं कि हमारा 1 ईयर 7 मंथ में हमारा ये पूरा जो है कवर अप हो जाएगा। Okay, so thank you. You are open for question. हेलो, Yes, sir. आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया? Yes, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा कि आपने जो मॉडल्स दिखाए उसमें जो फिजिकल मॉडल आपने दिखाया वो कुछ एक एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी सिस्टम रहती है जिसमें से बंदे पास होते हैं और स्कैन होते हैं, Yes, वैसा दिखता है। yes, sir. हाँ सर, वैसा दे। और आपने जो दूसरा पहला जो एक मॉडल दिखाया ग्रे कलर का, उसमें एक घर जैसा दिख रहा था, तो वो घर किसके लिए था? सर वो बेसिकली घर हमारा जो है उसको इलेबोरेट करने के लिए है कि सर उसमें जो सर एक घर, अब हम एक घर तो नहीं बनाएंगे सर उसमें, वो जो हमारा घर है वो बेसिकली उसको इलेबोरेट करने के लिए और उसको वाज दिखाने के लिए कि उसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है। सर आई थिंक हम इसमें इतने अच्छे से नहीं दिखा सकते थे इसको। ये घर जो है हमारा बेसिकली एक हमारी टनल की तरह से यूज हो रही है। ओके, और सेकंड थिंग, आप ये जो स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रेइंग सिस्टम आपने डेवलप किया है, तो इज इट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड? मतलब ऐसा सिस्टम पहले किसी ने बनाया है कि या सिमिलर कुछ? नहीं सर, अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बना सर, ऐसा मॉडल नहीं बना सर। ओके,
और आपने कहा कि ये सोलर पैनल पे चलेगा, तो आपके मॉडल के ऊपर क्या उतना स्पेस है आपके पास कि सोलर पैनल बिठा सकते हैं? ये टनल जो आपने हमने बना रखा है सर पूरा। यस सर, 3 ओके, सोलर पैनल भी लगा रखे हैं सर हमने। क्योंकि आपके वीडियो में वो दिख नहीं रहा था, तो आपका वीडियो में जो मॉडल दिखा रहा है यस सर, वो वो सोलर पैनल। यस सर, वो एक्चुअली में ऊपर से टॉप से हमने नहीं लिया सर, वो साइड में लिया था वो अब्दुल ने सर, तो इस वजह से सर वही वीडियो था हमारे पास। ओके, और आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है इसके लिए, मतलब आप ये किसको बेचने वाले हैं? सर ये बेसिकली जो हमारा टारगेट है, ये सर रूरल एरियाज के लिए था। ठीक है सर, ये रूरल एरियाज के लिए था, जहाँ पे सर हमारे पास पानी नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग जो है जहाँ पे हम केमिकल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं सर, उन बेसिकली हमने लगाया था। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट सर एक कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब एक टाइम के बाद इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर इसमें ना कुछ लगाना पड़ेगा ना कुछ हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये जो है हर जगह, इवन हमने यहाँ पे ट्राई करा, हमने जो है क्या कहते हैं मिस्टर ऋषि से बात करी, और सर हमने ये अपने RWO से बात करी, तो यहाँ पे मतलब हमने सब लोगों को दिखाया, तो उसके बाद हमारा जो है अभी उसमें वर्क चल रहा है, और हमारी कई जगह जो है बात हुई, और इसकी जगह उन लोगों को पसंद आया सर। इस वजह से पसंद आया क्योंकि सर इसमें कुछ हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सर। हम हर जगह जाते हैं, वहाँ पे टनल्स होती है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है, और वो लाखों में आता है सर, बिल लैक्स में आता है सर। हमारे उसमें सर एक बार आपको इन्वेस्ट करना है 1,23,000 या प्लस और माइनस अप्रॉक्सिमेट, और 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर आपको ये जो है कॉस्ट फ्री हो जाएगा, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आई थिंक अगर कोई वीडियो ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आती है ना। तो आपने जो क्लोरीन रॉड जो यूज किया है, जो हाइपोक्लोराइट आपने यूज किया है, वो क्या विलेज एरियाज में वो आपको अवेलेबल होगा? आपने कहा कि विलेज एरियाज में केमिकल ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं है। सर वो यस सर, वो क्लोरीन रॉड है सिंपल। अगर हम कोई मशीन बना रहे हैं तो हम उसे कंप्लीट सेटअप करके लगाएंगे सर वहाँ पे, राइट। हमें वहाँ लेकिन वो पे करना पड़ेगा थोड़े थोड़े टाइम बाद, वो कंज्यूम होएगा ना थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कंज्यूम होगा, लेकिन वाटर, लेकिन सर एक बहुत टाइम, उसमें एक टाइम लगता है सर। अब जैसे इसमें जो है हमारा केमिकल जो हम स्प्रे यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च हो रहा है, उसमें जो है 6 मंथ, 5 मंथ, 2 मंथ, इसमें अगर वही चीज हमारा 3 ईयर्स में हो रहा है या 2 ईयर्स में कंज्यूम हो रहा है, तो सर आई थिंक उसमें मेंटेनेंस का जीरो आ रही है सर। ओके, थैंक यू। सो आपके ये नए मॉडल में वो जो डिसइंफेक्टेंट आपने बनाया वो एक डिफरेंट है, आपने बोला ना वो सॉल्यूशन